सो हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। शायद मॉर्निंग में हमने कुछ एमसीक्यूज जो पब्लिश किए थे, शेड्यूल किए थे, वो शायद इसी टॉपिक पे थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर ऑन थ्रोम्बोसिस एंड द क्लॉटिंग फैक्टर्स. So I hope like this will be a very good, short, concise sort of like a audio lecture for the aspiring MBS and undergraduate lecture students. So what is a thrombosis? So thrombosis refers to the formation of a blood clot. It is also known as thrombus within blood vessel, obstructing the flow of blood. So why it's important? So understanding thrombosis is crucial because it plays a significant role in the several cardiovascular and the systemic diseases. So normal physiology of thrombosis. So it has hemostasis and clot dissolution. So hemostasis, the body's process to prevent the excessive blood loss after injury. So it's called as hemostasis. So it involves three key steps. They are vasoconstriction, platelet plug formation, and coagulation. So in what happens in vasoconstriction? So the blood vessel which is injured, having some sort of injury, it narrows down to reduce the blood flow to that particular location. So after that, there is a platelet plug formation in which the blood which is having platelets as a component which aggregate at a injury site, which forms a temporary plug. And in the third part, like after vasoconstriction and the plug formation, there is a coagulation. So it's a chemical process, biochemical process, coagulation cascade. So it stabilizes the platelet plug within the fibrin, forming a more permanent clot. So hemostasis के थ्री पार्ट्स जो हमने देखे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इस पर कुछ एम सी क्यूज़ आ सकते हैं. सो वॉसो कंस्ट्रक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, कोआगुलेशन, इसे थोड़ा सा डीप में किसी टेक्स्ट बुक से पढ़ा तो बहुत अच्छा रहेगा. सो मूविंग टू द सेकंड पार्ट, लाइक प्लॉट तो अभी फॉर्म हो गया है वहाँ पे इंजरी के साइड पे. सो उसके बाद में क्या, तो प्लॉट डिसोल्यूशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लाइक अ fibrinolysis. So after healing, the clot is gradually dissolved by plasmin, restoring the normal blood flow. तो ये बहुत ही शॉर्ट एक लेट्स से रिमाइंडर है कि फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है. उनको सिलेक्टिवली कुछ टेक्स्ट से भी पढ़ना चाहिए. सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग थ्रोम्बोसिस. सो थ्रोम्बोसिस हमें समझ में आ गया है, तो ऐसी कौन सी अलग अलग फैक्टर्स है जो इस चीज़ों को अफेक्ट करते हैं. सो देर इज़ अ वेरी वेरी गुड टॉपिक called as like virtuous triad. So basically it describes each and every step which we already mentioned in the above section of this lecture. So talking about like endothelial injury, hypercoagulability, and stasis of the blood flow. So three main contributors to thrombosis according to Virchow. So endothelial injury, which means damage to the blood vessel lining, often caused by trauma or inflammation, or maybe sometimes atherosclerosis. Then there is a hypercoagulability. So according to Virchow's triad, increased tendency of the blood to clot, like seen in the conditions like cancers, pregnancy, and some of the genetic disorders. And the last one is stasis of blood flow. So slowed or stagnant blood flow often seen in immobilization और varicose veins. So ये तीन चीज़ें जो है वो वर्क स्टार्ट में आती है. So you have to just like make a very good note of it. So stasis of blood flow, hypercoagulability, and the endothelial injuries.
तो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी रहते हैं कि जिसकी वजह से ये चीज़ें अफेक्ट होती है। उसमें एक फैक्टर 5 लीडन है, वो जेनेटिक म्यूटेशन है एक्चुअली, विच इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन विद इन द ब्लड वेसल। और प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन भी थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हो सकता है। एंड लाइफ स्टाइल जिसे हम कह सकते हैं, उससे भी ये थ्रोम्बोसिस अफेक्ट होती है फिजियोलॉजी। तो ओबेसिटी में, स्मोकिंग पर्सन में, या स्मोकर्स में, सर्जरीज में किसी किसी जगह कुछ ट्रॉमा होता है, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो लोग लेते हैं, या जिन लोगों को HRT रहती शुरू रहती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी रहती है, इन सभी को थ्रोम्बोसिस का रिस्क रहता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके रिगार्डिंग भी MCQ आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस वेयर thrombosis or sort of hypercoagulability or these type of disorders are there. So moving to the last part, let's see maybe. So what are the different types of diseases which are related to thrombosis? तो DVT, deep vein thrombosis, इसके बारे में शायद मॉर्निंग में एक MCQ था. So a blood clot in the deep veins, usually in the legs, so that is DVT, and if it's untreated, it can lead to the pulmonary embolism (PE), which is a life-threatening condition where the clot actually travels from the legs to the lungs. Second part is like इसका कंटिन्यूएशन है कि pulmonary embolism occurs when a blood clot blocks the arteries in the lung and it's a major complication of DVT. उसके बाद में स्ट्रोक भी है कि which is caused by the thrombus in the cerebral arteries blocking the blood flow to the brain and leading to the cerebral ischemia. So affecting the cardiovascular system, affecting the cerebral system, affecting the respiratory system. So मेजर थोड़ा सा टॉपिक इसमें इन्वॉल्व होता है कि आपको बाकी फिजियोलॉजी भी एक्चुअली इसमें पढ़नी पड़ेगी. So after like that is there is a myocardial infarction or a heart attack. So a thrombus which blocks a coronary artery, causing reduced blood flow to the heart muscles and resulting in a damage. And last one is thrombocytopenia, a condition where there is a lower than normal platelet count, reducing the body's ability to form clots, so leading to the excessive bleeding. So ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ है, DVT, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सेरेब्रल स्ट्रोक्स, मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इनके बारे में भी शायद कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहिए कि जिसमें MCQs मोस्टली आते हैं. सो अभी ये सब तो हो गया इसके बारे में. सो मेन जो चीज़ है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो आपको उसका मेकेनिज़्म भी पता होना चाहिए कि वो किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, डिफरेंट उनके कनेक्शंस होते हैं, इंटर हाउ दे आर लाइक इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर एंड व्हाट डज एक्चुअली दे डू. सो इंट्रेंसिक पाथवे हमें पता है, इंट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक पाथवे रहता है दोनों चीज़ों में, और एक कॉमन पाथवे भी रहता है, तो वो भी अच्छा खासा एक टॉपिक है. एंड नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, ऑब्वियसली सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं, पर कभी कभी एग्जामिनेशन के टाइम पे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की वजह से या थोड़ा सा स्ट्रेस होने की वजह से सिंपल MCQs भी काफ़ी लोगों के रॉन्ग हो जाते हैं. सो बेसिक चीज़ों में ध्यान रखना तो ऑब्वियसली एडवाइस. जस्ट लाइक फैक्टर फर्स्ट है फाइब्रिनोजेन, फैक्टर सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर थर्ड है टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 4 है कैल्शियम, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 जो जिनकी डिफिशियंसी के रिलेटेड हीमोफीलिया A और B भी होता है. इसके रिगार्डिंग शायद मॉर्निंग में एक MCQ था. And the factor 10, it is central to both pathways and key in converting the prothrombin to thrombin. So what are the different types of these pathways through which this mechanism occurs or process occurs, and factors involved in the separate pathways and the common pathways also. So it is sort of a SI कुछ topic है. So conclusion, thrombosis and the complex physiology of clotting, these are the essential topics for like everybody, not just like dental student who's practicing dental professionals. उनके लिए भी काफ़ी अच्छा topic है in order to just like overall evaluate the medical conditions of a person who is actually undergoing any kind of dental treatment and your dental practice. So understanding these mechanisms is important for managing the systemic diseases, but also crucial in the context of the dental surgeries. So disinfections रहते हैं बहुत बार, या सिंपल एक्सट्रैक्शंस भी रहते हैं, बट
प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री अगर ना ली जाए तो सिंपल एक्सट्रैक्शंस, नॉन